Namaskar, I am Anand and all of you are in the live class of Join for Education. मैं हूं आनंद और आप जॉइन फॉर एजुकेशन के लाइव क्लास में हैं। आज मैं आपके साथ चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11 और सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के डिटेल्स को डिलीवर कर रहा हूं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आंसर पहले से पीडीएफ में प्रीपेयर्ड है, मैं उसी को रीड करूँगा। लेट्स सी, अगर इस क्वेश्चन नंबर 1.1 को यदि हम एनालिसिस करते हैं, इफ वी एनालिसिस द क्वेश्चन 1.1 देन 1 2 3 and this is 4. There are 4 questions. All questions are based upon change of one system of unit into another. एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यदि आप पहला क्वेश्चन को देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यूब मीटर। सेंटीमीटर है और इसको क्यूब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। इट मीन्स दैट सीजीएस सिस्टम को एमकेएस या एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। सीजीएस सिस्टम में द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर and in SI or MKS system the unit of length is in meter. यहाँ जिस फिजिकल क्वांटिटीज पर कंसिडर किया जा रहा है वो आपका वॉल्यूम है। तो लेट्स सी द डिटेल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशंस के डिटेल्स को देखिए। फर्स्ट स्टेप 1 सेंटीमीटर को ही मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। इट मीन्स दैट वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका 1 मीटर होता है, देयरफॉर आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। इस स्टेप तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, नेम ऑफ द शेप इज क्यूब, और उसके वॉल्यूम के फार्मूला को रिकॉल करने से एल क्यू होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। और यहाँ पर आपका ऑलरेडी गिवन है 1 क्यूब सेंटीमीटर, बट we know that 1 cube centimeter, it means that 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter. अभी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर देख लीजिए, फिर आपका 1/100 मीटर और फिर से आपका 1/100 मीटर। एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज ए सिंपल मल्टीप्लिकेशन व्हेन 100 into 100 into 100 multiplied 3 times and 100 equal to 10 to the power minus 2. So 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 2 will be 10 to the power minus 6. 10 to the power minus 6. So 1 cube centimeter equal to 10 to the power minus 6 cube centimeter. क्वेश्चन तो यहाँ बोला था कि fill in the blanks. इट मीन्स दैट खाली जगह को भरिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 to the power minus 6। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर। अभी तो हमारे पास अवेलेबल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो आपका सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस है और एसआई है। किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर देखा जाए तो आपका सेंटीमीटर
सीजीएस में है बट मिलीमीटर किसी में भी नहीं है। सो दिस इज द करंट सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो इट मीन्स दैट इफ वी हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट कन्वर्शन ऑफ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यदि सेंटीमीटर और मिलीमीटर के कन्वर्शन का आइडिया है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन को देखिए। यही है आपका द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हाइट एच। तो टोटल सरफेस एरिया के फार्मूला को रिकॉल कर लिया गया। ये आपका 2 पाई आर और फिर आर प्लस एच होता है। गिवन है आपका क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। सो 2 × 10 मिलीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मिलीमीटर। How that there is no problem to understand up to this step. इस स्टेप तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। So height is 10 centimeter. Therefore, height in millimeter it will be 100 millimeter. So let's see. अब यहाँ पर देख लेते हैं s इक्वल टू आपका 2 पाई आर, 2 पाई ये आपका r और फिर आपका r प्लस एच। अब साढ़े को हम लोग यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 2 पाई आर का वैल्यू जो 2 सेंटीमीटर था 2 मिलीमीटर में आ गया। फिर आपका आर फिर आपका 20 मिलीमीटर और एच आपका हो गया 100 मिलीमीटर। अब सिंपल इसमें क्या करना है, एक कैलकुलेशन कर देना है। लेट्स सी द कैलकुलेशन आपका यहाँ पर। लेट्स सी द कैलकुलेशन यहाँ देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन हियर विल बी इक्वल टू 2 into here will be 3.14 into 20 into 120। अगर आप यहाँ जीरो देखें 1020 कैंसिल, तो ये डेसिमल आपका यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स दैट 2 जा 4 और 4 12 जा 48, या 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 4 जा 16 8 and 1 4 and 5 and 4 3 जा 12 into multiplied by this 12, so we get this one 15072 equal to, in the standard form this one will be 1.5 into 10 to the power 4 मिलीमीटर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यही वहां लिख देना होगा 1.4 into 10 to the power 4 मिलीमीटर। 1.4 into 10 to the power 1.5 into 10 to the power 4 millimeter। So hope that there is no problem to understand this solution. Let's see the next question। किलोमीटर को यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। तो लेट्स सी 1 किलोमीटर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप यहाँ लिखते हैं तो 1000 आपका मीटर हो जाएगा, और आवर इट मीन्स दैट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट इंटू
1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर आप इसको यहाँ से कर देते हैं तो यही आपका 5/18, ये आपका 5, ये आपका 3 और 3 6 जो आपका 18। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। Therefore, 18 kilometer per hour equal to multiplied both side by 18, then we get 5 meter per second. Therefore, the distance can be obtained using relation. तो डिस्टेंस के फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो दिस इज द स्पीड, स्पीड आपका 5 है और टाइम आपका 1 है, तो ये आपका 5 मीटर हो गया। हैज द व्हीकल कवर्स 5 मीटर इन 1 सेकेंड। Of that there is no problem to understand the solution of this question. Let's see the next or last question of this one. So this is the relative density of a substance is given by the relation. Density mass by volume होता है, uh, density of substance by density of water. Relative density it means that we find out किसका, तो कोई सब्सटेंस है वाटर के रिलेटिव में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपका 1 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर होता है। और डेंसिटी ऑफ लेड इट मीन्स दैट सब्सटेंस का नाम आपका लेड है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लेड 11.3 है, इंटू 1 इक्वल टू 11.3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। अगेन हम लोग चल लेते हैं। वी नो दैट 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, therefore 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, and you 1 cube centimeter equal to 10 to the power minus 6 cube meter. So 1 gram per cube centimeter equal to, this one will be 10 to the power minus 3 kg. So this one, and 1 cube centimeter equal to 10 to the power minus 6, and unit of density in this system is kg per cube meter. After the simple calculation, we get 10 to the power minus 3 kg per cube meter. Therefore, 11.3 gram per cube centimeter equal to 11.3 into 10 to the power 3 kilogram per cube meter. Of that there is no problem to understand the explanation of the solution of this question. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक से ही रिलेटेड है। ये देखिए आपका 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और यह -2 है, इट मीन्स दैट पर सेकेंड स्क्वायर भी हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। इसको kgm इट मीन्स दैट mks में है या SI में है, उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है CGS में। बस कुछ नहीं, केवल डाल देना है 1 kg इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम एंड 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेकेंड तो 1 ही सेकेंड जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई दिस टू, देन 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर converted into, then this one will be 10 to the power 7. So 1 kilogram meter square per second square equal to 1 kg, 1 meter square 1 second square, so this one 10 to the power 3 gram into 10 to the power 4 centimeter square into 1 second square equal to 10 to the power 7 gram सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लाइट ईयर एक्चुअली में एक यूनिट है, एंड दिस यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट के द्वारा 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को लाइट ईयर कहा जाता है। तो 1 लाइट ईयर, जनरली लाइट ईयर को एल से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर। तो एक्चुअली में स्पीड ऑफ लाइट आपका होता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर इक्वल टू आपका 365 डेज, एंड 1 डेज इक्वल टू 24 आवर, एंड 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये सारा कन्वर्ट हो गया सेकेंड में। आफ्टर द सिंपल मल्टीप्लीकेशन वी गेट दिस वन, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सेकेंड सेकेंड आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू आपका हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देयरफॉर 1 मीटर इक्वल टू, ये मूव कर जाएगा इन द लेफ्ट हैंड साइड, देन वी गेट 1/9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आफ्टर द सिंपल कैलकुलेशन वी गेट दिस वन, so 1.057 into 10 to the power minus 16 light year, 1 meter equal to. So 1 meter equal to 10 to the power minus 3 kilometer. Again, 1 second equal to 1 by 3600 hour, and 1 per second equal to 3600 per hour. And 1 per second square equal to 1 per second square equal to 3600 to the power 2 per hour square. So 3 meter per second square equal to 3 into 10 to the power minus 3 kilometer, and 1 second square equal to 3600 square per hour square. After the simple calculation or multiplication we get this one. So hope that there is no problem to understand up to this step. Let's see 1 Newton. 1 न्यूटन इक्वल टू कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। So 1 cubic meter equal to 10 to the power 6 cube centimeter. Therefore 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square equal to, now we start to put the value, 1 kilogram per meter second square, 1 meter square, 1 second square. So this is the 1 kg, 1 cube meter, and 1 second square. After the simple calculation we get this one. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. So let's see the next question. And your next question is question 1.3. First of all, we read the question. After that, we analyze the question, and at last we solve the question. पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर सॉल्व कर लेते हैं. A calorie is a unit of heat or energy. It equals about 4.2 joule, where 1 joule equal to 1 kilogram meter square per second square. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass
equal alpha kg. The unit of length equal beta meter. The unit of time is gamma second. So that a calorie has magnitude 4.2 per alpha per beta square into gamma square in term of new units. ये भी आपका कन्वर्शन ऑफ यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो लेट्स सी क्या कन्वर्शन है. From question it is clear that it is given that 4.2 into 1 kg into 1 meter square into 1 second square. New unit of mass is alpha kg, uh, beta meter and gamma second. So let's see 1 kg equal to 1 by alpha. So this one will be alpha to the power minus 1 in term of the new unit of length 1 meter equal to 1 by beta, and this is the beta to the power minus 1, and 1 meter square equal to beta to the power minus 2. And in terms of the new unit of time, this is 1 second equal to 1 by gamma equal to gamma to the power minus 1. So 1 second square equal to gamma to the power minus 2. So 1 second to the power minus 2 equal to gamma square. So 1 calorie equal to 4.2, 1 alpha to the power minus 1, 1 beta to the power minus 2, and 1 gamma square. After the multiplication we get this one. After there is no problem to understand the solution of this question. So we have in conversion of new unit, we write down here N1 equal to M L T, and the dimension of this physical quantities will be what? Let's see here. The dimension of this physical quantities will be written here 1 joule equal to this one. So the dimension of this one will be mass length, it means that L square into T to the power minus 2, and the numerical value of this one is 4.2 equal to here. What is the numerical value in this system of unit? So here will be suppose M1 L1 T1, then here will be M2 L2 square into T to the power minus 2 square. So here N equal to 4.2 M1 by M2 and L1 by L2 to the power 2 into T1 by T2 to the power minus 2. So here there is one more method. ये एक और अलग मेथड होगा, इस मेथड पर भी वही आंसर आएगा. So you can use any one of these two methods to solve this question. Let's see the next question. आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं. What is the next question? This is the question number 4. Explain the statement clearly. To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. In view of this, reframe the following statement: wherever
necessary. Atoms are very small objects. A jet plane moves with greater speed. The mass of Jupiter is very large. The air inside this room contains a large number of molecules. A proton is much more massive than an electron. The speed of sound is much smaller than the speed of light. So let's see the answer. The given statement is true because a dimensionless quantity may be large or small in comparison to some standard reference. For example, the coefficient of friction is dimensionless. The coefficient of sliding friction is greater than the coefficient of rolling friction but less than a static friction. A atom is very large object in comparison to a scooter one. A jet plane moves with a speed greater than that of a bicycle. Mass of Jupiter is very large as compared to the mass of a cricket ball. The air inside this room contains a large number of molecules as compared to that present in a geometry box. A proton is more massive than an electron. A speed of sound is less than a speed of light. Hope that there is no problem to understand the answer of question number 1.4. Let's see the question number 1.5. A new unit of length chosen such that the speed of light in vacuum is unity. What is the distance between sun and the earth in terms of the new unit of if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? Let's see the solution of this question. Distance between the sun and the earth, a speed of light into time taken by the light to cover this distance. Given that in new unit, a speed of light equal to 1 unit, time taken t equal to 8 minutes which 20 second equal to 500 second. It means that 8 into 60 plus 20 equal to 500 second. Distance between sun and the earth equal to a speed of light into time equal to 500 units. After there is no problem to understand the solution of this question. Let's see the next question. This is the next question. Which of the following is the most precise device for measuring length? A vernier calipers with 20 divisions on the sliding scale. A screw gauge of pitch 1 millimeter and 100 divisions on the circular scale. An optical instrument that can measure length to within a wavelength of light. Let's see the answer of this question. Answer of this question is a device with minimum count is the most suitable to measure length. Least count of the vernier calipers equal to 1 standard deviation minus 1 vernier division equal to 1 minus 9 by 10 equal to 1 by 10 equal to 0.01 centimeter. So least count of the screw gauge equal to pitch by number of divisions. So pitch is 1 and number of divisions is 1000. Therefore this one is 0.001 centimeter. Least count of an optical device equal to wavelength
equivalent to 10 to the power minus 5 centimeter equal to 0.00001 centimeter. Hence, it can be inferred that an optical instrument is the most suitable device to measure length. Of that, there is no problem to understand the answer of this question. Let's see the question number 1.7. So, in question 1.7, a student measures the thickness of a human hair by looking at it through microscope of magnification 100. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of microscope is 3.5 millimeter. What is the estimate on the thickness of the hair? Of that, there is no problem to understand the question. Let's see the answer. Magnification of the microscope equal to 100. Average width of the hair in the field of view of microscope is 3.5 millimeter. Actual thickness of the hair is 3.5 by 100 equal to 0.035 millimeter. Of that, there is no problem to understand the numerical calculation or answer of this question. Let's see the question number 1.8. So, answer the following here. You are given a thread and a meter scale. How will you estimate the diameter of the thread? Second, a screw gauge has a pitch of 1.0 millimeter, 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by the increasing the number of divisions on the circular scale? The mean diameter of a thin brass rod is to be measured by the vernier calipers. Y is a set of 100 measurement of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only. Let's see the answer of this question. Wrap the thread on a uniform or smooth rod in such a way that the coils thus formed are very close to each other. Measure the length of the thread using a meter scale. The diameter of the thread is given by the relation diameter equal to length of the thread by number of turns. It is not possible to increase the accuracy of a screw gauge by increasing the number of divisions of circular scale. Increasing the number of division of the circular scale will increase its accuracy to a certain extent only. A set of 100 measurement is more reliable than a set of 5 measurements because random errors involved in the former are very less as compared to the latter. Of that, there is no problem to understand the solution of question number 1.8. Here we have question number 1.9. The photograph of a house occupies an area 1.75 centimeter square on a 35 slide. The slide is projected onto a screen
and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? Let's see the solution or answer of this question. Area of the house on the slide is 1.75 centimeter square. Area of the image of the house found on the screen is 1.55 meter square. So this one will be equal to the 1.55 into 10 to the power 4 centimeter square. Hope that there is no problem. Already we have convert 1 meter square into centimeter square. Aerial magnification equal to area of image by area of object. Area of image is this one, 1.55 meter square by area of the object equal to 1.75 meter square, and this one into converted into centimeter, then we multiply 10 to the power 4. So the linear magnification equal to this one. Now putting the value of this one, we get 1.55 by 1.75 into 10 to the power 4 over root. After the calculation, we get 94.11. Hope that there is no problem to understand the solution of question number 1.8. 45 minutes has over, and I have solved question number 1 to 1.9. I will solve or answer rest question in the next class. Till then, thanks to all of you. Thank you very much. For immediate notification, subscribe the channel and hit the bell icon so you get the notification as soon as I will be live. Once again, I thanks to all of you. Thank you very much.